Mm. Hello, good afternoon. Hope everybody is doing great. And this is Mr. Riaz to study with you and work with you about Pgcert. This would be probably a third lecture on research methodology and the whole course with regard to uh, largely with regard to Pgcert certificate program. And I'm glad to be here with you again. Would you please let me know if I'm audible? Yes, sir. Good Uh, afternoon. Good afternoon. Who's this? This is Madiha? Uh, I'm Farhana. Farhan. Hi, Farhan. How are you? I'm good, sir. First of all, Farhana, I am glad that I checked your work, the assignment you had sent to me. I actually printed it out and then I was able to go through. That was a really good work, and you had brilliant thoughts in your uh, what you call it, assignment, but uh, would you please do some kind of more improvement in terms of number one, format and style? कि जो आपका cover page था उसको center करना है. Anyway, I'm going to show you the sample today again. और फिर बच्चे आप जब लिखते हैं तो make sure you break it down your thoughts into different paragraphs. Your thoughts were great about the technology and receiving and giving and both, but I wish you could have actually broken it down into different paragraphs with different length of the paragraph. By doing so, you can actually beautify your assignment, and plus it is much easier for the grader to grade your assignment. But anyway, I will also show you the sample. And since we are talking about research methodology and overall how this subject is going to help us in our teaching on the lower scale. Is that okay? Yes, sir. Thanks. I don't want to waste much of our time, but I would love to talk about the different approaches towards our research. Basically, there are three common approaches to conducting research that are quantitative, qualitative, and mixed methodology. Now, first of all, you might be wondering, why are we studying research methodology here? One of the reasons to study research methodology here in this Pgcert is for you to get acquainted and get familiar with the system of, the form and style of writing assignments. This will help you to compose your short assignments and project, and also when you are going to write a little bigger project, but it wouldn't be like a dissertation, but it would be still more like a bigger project. And then the same thing, it will help you actually when you go for the higher study. So that's the reason that we are studying research methodology. So today we are going to talk about different approaches that are applied when you're writing your thesis. This is actually important for us to understand. It may not help you in the beginning, but eventually, in tomorrow, when you're going to do your higher study, they will still help you. For instance, okay, so there are three approaches: quantitative, qualitative, and mixed methodology, mixed methods approach. Not methodology, but methods.
the researcher anticipates the type of data needed to respond to the research question. For instance, in numerical, textual, or both numerical and textual, this was supposed to be in, sorry, data needed. Based on this assessment, the researcher selects one of the three aforementioned approaches to conduct the research. आप कोई भी उनमें से कर सकते हैं approach को according to the nature of your research. Hello? Yes, sir. All right. Okay. So anytime you're giving topics, please in order for your speech to be well said and much more. I'm going to give you the sample. I have the sample. Just wait. Just give me a few minutes. I have already told this. I'm just like one slide behind. Hold on. This is the sample. This is the sample. Hold on. Sir Steve. Because the way they act is Hello, not Stephen, in please be careful. Even the last time it was quite disturbing and interrupting from your side. Please watch your mic and keep it mute. We appreciate that. It is not okay to show it out. This is what public speaking takes. It's an acting board out feelings, and others' feelings are more important than our interest level. Now, this is the conversation between the you being the host could put him Did on you mute. know Would you please? that each pumpkin has about 500 seeds? In his thinking mind, he said, I am not really interested in pumpkins. But if I ask Bob, Thank you, sir. Sorry for the inconvenience. You may resume, please. Okay, so today we will start with the guideline to writing thesis or writing assignments. Number one, on the top, you need to come up with your title. This thesis title or subtitle, both, and make sure this title has to be centered. ये बिल्कुल उसके center में आता है. And इसके नीचे by आएगा. By जो है ये भी बिल्कुल center में है. Then you write your name, and then you write a thesis word as it is. Then you write submitted to, like, the name of the department and then university name, in partial fulfillment of the requirements for the degree program or certificate program. This is the general method of writing your project. Now, when you're writing your short assignment, Farhana, which is why when I checked your work, it was great. But according to the form and the style, I wish you would follow this one for the next time. You can follow one of the form and style, MLA or APA. Whichever you like, we can accept, but most probably we shall be working on APA style of writing. This is Association of Psychologists, Scholars, APA. They came up with this idea. And then you write your acknowledgement in this section where you thank those who have helped and supported you during the research and writing process. This section is optional, however, and should be no longer than 1 page. Acknowledgement is always certain on 1 page. And then move from thinking to the people most formally involved. आप उनका अपने supervisor का thank कर सकते हैं. जितने भी आपके साथ लोगों ने help की है, you should always give thanks to them. Then you shall be also focusing on writing your abstract. What is abstract, by the way? Some of you have already written your thesis. Farhana, would you explain what the abstract is, just for a few seconds, please? Is Madiha there?
Mr. Taha, you have done your research work. Just give me one thought on abstract. Yes, sir, I can give you a thought. Abstract is a general introduction about the whole thesis. It's an introduction, basically. We can get the whole idea of what's going to be inside the research. Abstract is all about a comprehensive, brief introduction. Okay. It's a summary of your entire thesis. Well said, but I think you could have also include a little bit more on this, because it says abstract aamtaur pe it is based on the summarizing of your entire thesis. It concisely supports the aims and outcomes of your research, and it's generally around 150 words to 300 words. But it also, yeah, depending on the size of the demand of the university, but usually agar aap 300 words ke likh lete hain, so this is more than enough. No more than one page. Make sure your abstract must be comprised on one page, and state your research problem in that and objectives briefly. Then and after abstract, you could also come up with your research problem. No, research problem and objective, it's not a part of the abstract, everybody knows. It's the second page. I have just put some things on one slide. But then you come up with your problem. Taha, how do you start your thesis or Sir, any assignment? Yes, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई वजह क्या थी कि हमने ये थीसिस लिखी, क्यों रिसर्च स्टार्ट I mean, first of all, you identify the problem. यस उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, और उसके बाद हमने डाटा को किस तरह इंटरप्रेट नहीं, किया। वो हमारी तो ठीक इंजीनियरिंग है, वेरी गुड। थोड़ा सा जंप ना करें दूसरों की खातिर। जी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आपने बहुत अच्छा कहा। फिर उसके बाद हम उसका एक क्वेश्चन भी तैयार करते हैं जिसको हम प्रॉब्लम क्वेश्चन कहते हैं। जी 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 ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जो briefly describe the problem or question your thesis addresses, like state your specific objectives, फिर हम objectives लेके आते हैं, ठीक है, and use the present or simple past tense when you're writing your stuff. And then as Taha was explaining, then you describe your method. Okay, Taha, can you differentiate between the methods and methodologies? सर ये थोड़ा Anybody else can also contribute. Anyone. Methods and methodology. Farhan, are you there? Yes, sir. बच्चे methods में methodologies में क्या फर्क होता है? Can you give us your input, please? method में जो है हम tools पर काम करते हैं, I think, और जो behavior होता है हमारा और जो research techniques होती हैं उनको follow करते हैं। But methodology में जो है हम जो है investigation करते हैं। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। जो टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए, वो आपकी मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है। इसको आगे भी बयान किया जाएगा। मेथोडोलॉजी हमें बताते हैं कि हाउ डेटा वाज कलेक्टेड एंड गैदर्ड। मेथोडोलॉजीज ही हमें बताती हैं कि आपने जो डेटा लिया है उसको एनालाइज कैसे किया। मेथोडोलॉजीज हमें ये बताती हैं कि हमने जो डेटा लिया था उनको इंटरप्रेट हमने किस तरह से किया है, ठीक है। मेथोडोलॉजीज हमें बताता है और ये भी बताती है कि कौन कौन से हमें मतलब उसमें जो प्रॉब्लम आई हम उनको भी बयान कर सकते हैं।
टेक्निक्स क्या थी, किस तरह से हमने सर्वे को कंडक्ट किया, उसमें हमने इंटरव्यूज लिए, और हमने सर्वेस किए, हमने क्वेश्चनेयर तैयार किए, उसके बाद फिर हमने उनको उस पे आके लीकर स्केल पे आके हमने उसको मेजर किया। हमने जो हमारे हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किए थे, हमने उनको टेस्ट किया। सो जो टेस्टिंग टूल्स, ऑल दिस कम्स अंडर मेथोडोलॉजी। ओके, and you also summarize your results, you summarize your arguments, लोगों के साथ क्या arguments, मतलब दो ग्रुप्स की अगर आपकी फर्ज करें रिसर्च थी, तो फिर आप लोगों के आर्गुमेंट्स को समराइज करते हैं। you can also explain all the problem that I have already said you have faced. Now, जब आप छोटी भी असाइनमेंट लिखते हैं, मतलब अगर फर्ज करें 10 से 15 पेजेस की हैं, तो मुझे उस पर लिस्ट ऑफ फिगर दे दें, उसके टेबल बनाए हैं वो भी दे दें, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन कर दें। ये तो बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा ही होता है। उसमें ग्लोसरी हमारे पास आ जाती हैं, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, इस पे हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये जो पहले वाली चीजें हैं ये बहुत जरूरी नहीं है, ये दे आर माइनर थिंग्स, यू नो them. But main thing that we want to work on is literature review, methodology, results, discussions, conclusion, recommendation, so forth, so on. So इनमें से जो अहम तरीन पॉइंट है जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था, लिटरेचर रिव्यू। I need everybody's input on that. How do you define literature review? सर क्या मैं बता सकता हूँ? बिल्कुल ताहा, go ahead please. सर लिटरेचर रिव्यू में हम ये करते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस रिसर्चेस थी उसके बारे में जो है वो हम सारे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि वो देखते हैं कि आया दुनिया में इससे पहले इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, वहां से हम आइडियाज कलेक्ट करके वो उसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे जो है नोट डाउन करते हैं। तो ये लिटरेचर रिव्यू होता है। Yeah, literature review is like you find out all the information with regard to your topic, जो आपका रेलेवेंट टॉपिक होता है, आप उसी के मतलब और उसी की रेलेवेंस में जाके आप सारा डेटा गैदर करते हो। मतलब दूसरे लोगों को पढ़ते हो, हिस्ट्री को पढ़ते हो, जिन लोगों ने उसके ऊपर पहले रिसर्च की होती है, आप उनके पॉइंट्स देखते हो, फिर आप उनके साथ अग्री करते हो या डिसअग्री भी कर सकते हैं। Is that okay? Now, there's a literature review. फरहाना, आप कुछ एडिशन करना चाहेंगी बच्चे? Yes, I am listening. That Okay. which you are. Oh, that's all right. Anybody else who wants to add on something? रुकैया, बच्चे कुछ ऐड कर सकते हैं आप? Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, yeah, please. No, हम sir. लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऐड करने की। अच्छा लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? Sir, can you repeat, please? असाइनमेंट में या आपका जो छोटा प्रोजेक्ट है, और मे बी योर बिगर थीसिस, how do you define literature review and what is the role of literature review in your thesis? Hello? Sir, mind. Rukaya, we have lost you, I think. सर लिटरेचर रिव्यू नहीं आ रहा माइंड में कि क्या होता है।
ताहा आपने बड़ा अच्छा बताया था. Can you say it again please? सर लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में जो पहले से पूरी दुनिया में जो रिसर्चेस हो चुके हैं उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं कि आया वो हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें पहले से ऑथर या पहले से जो रिसर्चर है उन्होंने क्या उनके क्या जो है वो ख्यालात है उस बारे में, और अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप उसके रीजंस भी वहाँ पे उसी अपने रिसर्च में लिखेंगे. लेकिन लिटरेचर रिव्यू में होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाटा आप एक जगह पे कलेक्ट करेंगे भाई, और उसके क्या बोलते हैं आप रेफरेंस भी वहाँ पे शो करेंगे अपने रिसर्च में कि ये चीज जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ये चीज यहाँ से और पिक यू कर रहा मेक श्योर कि हूँ. अगर आप किस जी जी. वेरी गुड, थैंक यू. मेक श्योर कि अगर आप किसी का आइडिया लेते हैं, किसी की स्टेटमेंट लेते हैं, उसको कोट करते हैं, तो यू मस्ट गिव देम द क्रेडिट्स. अगर आप उनको क्रेडिट नहीं देते तो डेफिनेटली वो आपका प्लेजरिज्म में चला जाता है. बिल्कुल ऐसे. अच्छी बात यह है कि फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ताहा ने उस पे कोई काम किया हुआ है, तो मैं ताहा के किए हुए काम को कोट करना चाहता हूँ अपने पेपर में. तो आई वुड से मिस्टर ताहा, वर्ड मिस्टर का आमतौर पर यूज नहीं होता. ताहा स्पोर्ट्स दिस आइडिया, और ताहा एड्स ऑन टू दिस, और ताहा एड्स, और कहते हैं कि ताहा का उसमें जो ओपिनियन इसके बारे में ये है. तो आई मस्ट मेंशन द नेम ऑफ मिस्टर ताहा बिकॉज ही हैज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स माय रेलेवेंट टॉपिक. तो मेरा रेलेवेंट टॉपिक है उसके बारे में पहले लिखा हुआ है, तो फिर उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको क्रेडिट दूं. उसको क्रेडिट नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि मैंने प्लेजराइज कर दिया किसी की स्टेटमेंट को, किसी के आइडिया को. रुकैया बच्चे, आपको समझ आ गई है? इज इट क्लियर टू यू प्लीज? Yes, sir. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कल जब आप टीचिंग करते हैं, फर्ज करें, तो आपकी किस तरह से ये, आप स्टूडेंट को किस तरह से ये सिखा सकेंगे? आपको क्या लगता है कि आपकी स्कूल में है या कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, तो जब आप उनकी असाइनमेंट लिखवाएंगे तो फिर ये किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है ये चीजें? एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है. Would you think this is going to help you in your future when you are teaching in the field? यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा जाती जो कहना है या सोच है कि पाकिस्तान में खास तौर पे ना रिसर्च उस तरह से नहीं होती जिस तरह बाहर ममालिक में होती है, जिस तरह क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाता है. यहाँ पर रिसर्च की बहुत कमी पाई जाती है. इवन हम खास तौर पर मेरा ताल्लुक इंजीनियरिंग सेक्टर से, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो जी जी. किसी भी जैसे आईसी है मिसाल के तौर पे, अब कोई हम पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके लिए टेस्टिंग लैब नहीं है. तो हम बस जैसे तैसे करके काम चला लेते हैं, वो चीजें जो समझ में पब्लिश भी हो जाती है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर उसकी ना टेस्टिंग हुई भी होती है ना उसके ऊपर जो है वो उस तरह से रिसर्च हुई भी होती है. तो मेरे ख्याल में ये जो आप अभी ये चीज समझा रहे हैं ये बच्चों को हाई स्कूल लेवल पे ही समझानी चाहिए कि भाई असल चीज यही है, अगर आपके मुल्क में इनोवेशन नहीं होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती, तो आप जो है वो टेक्नोलॉजी में फिर डेवलप कंट्रीज के मोहताज ही रहेंगे. आप अपना फिर कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी. इसके लिए जरूरी है कि आपको खुद मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि कैसे रिसर्च होनी चाहिए. जब टीचर को खुद पता होगी मैं तो एक फिर वो बात अपने पे बड़ा अच्छे तरीके से कहना चाहूंगा ताहा के साथ. जी प्लीज बोले. जी जी, मेरा बस यही कह रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो है ना वो रिसर्च का उस तरह का माहौल नहीं है. रोड लर्निंग है यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, वो रिसर्च अगर करवाई जाए ना कि भाई किस तरह डिजाइन किए जाते हैं सर्किट्स या किस तरह आईसी डिजाइन होती है. अब हम लोग वही रिलाई करते हैं बाहर के वाले में, हमारे यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है उस टेक्नोलॉजी की, चाहे मैकेनिकल लेवल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो, वो हम लोग बाहर से बस टेक्नोलॉजी का कॉपी कर लेते हैं और असेंबलिंग करते हैं. यहाँ पे कोई खुद से जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उस तरह बड़ी, से रुझान नहीं है. जी. yeah, because at this time I think the way technology has come and the world has moved to kind of different direction, and everything is digitalized. I think the time has come
कि हमें ज्यादा रिसर्च करनी होगी। और फिर इसके अलावा एक और भी बात है, जो चीजें हम एमए लेवल पे सीखते थे ना, मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज हमें वो हाई स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखानी पड़ेगी। तब जाके हम इंटरनेशनल या वर्ल्ड का या ग्लोबली हम एक मतलब कि थोड़ा कहीं पे अपने आप को फिट करने के लायक ठहर सकेंगे। Hello? Taha, Yes, sir. did you hear me? Yes, sir. I can hear Yeah. you now. तो मैं आपके साथ ही एक्चुअली कॉपरेट करना चाह रहा था कि जो चीजें हम एमए लेवल पे करे थे ना, वो अगले 5 साल में, 10 साल में वो हमें हाई स्कूल में करना पड़ेगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैच अप द टाइम, बिकॉज इन बिल्कुल फ्यूचर तो ऐसे फिर हम और ही पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। If you have any मेरी question, आवाज you आ can रही ask, or you can go to chat box and put your question there, please. या था आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं समझा कि मेरी आवाज नहीं आ रही आपको। आ रही आवाज आपकी। जी। फरहाना, बच्चे आप हमारे साथ ही हैं? ओके फरहाना, गो अहेड प्लीज आस्क। Yes, sir, I have a question. As you said that literature view. Okay, so I have a question about that. आपने जैसे अभी कहा कि उसमें जो है हम उसको वो करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी की भी मिस्टर ए वाई जी और मिस ए बी सी जो है उनका ये जो है कहना है इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, या जो भी है वो ये पहले से कह चुके हैं। तो इसमें हम किसी भी किसी भी ठीक है। राइटर की या किसी भी ऑथर की या किसी भी साइंटिस्ट की कोई भी यानी उसी टॉपिक से मुतालिक तो उसको कोट कर सकते हैं, उसकी कोटेशन को या उसकी जो भी उसकी थिंकिंग या थ्योरी है उसको लिख सकते हैं, या सिर्फ किसी यानी किसी नॉर्मल इंसान की या किसी यानी फेमस ऑथर वगैरह को भी कोट कर सकते हैं। उसका कहने का बहुत मतलब अच्छी। ये है। ताहा, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हेलो हेलो। इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे? सर मुझे इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप रिपीट कर दें। मैं समझने की ओके, कोशिश देखो की लेकिन ये क्वेश्चन इनका था, फरहाना का क्वेश्चन ये था कि हम किसी स्कॉलर साइंटिस्ट की या किसी हिस्टोरियन की या उसने कोई बात की हो तो क्या हम उसको भी कोट कर सकते हैं? इसके अलावा कुनामल मैन ने कुछ कहा जो बड़ा मशहूर कोई ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है, तो क्या हम उसकी कही हुई बात को भी कोट कर सकते हैं? फरहाना, यही क्वेश्चन था आपका बच्चे? यस सर, एग्जैक्टली। सर अगर कोई जेन्युइन ऑथर है, पहली बात तो ये है कि अगर उसकी बात पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, कोई बुक में पब्लिश हो चुकी है या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुकी है, तो फिर तो आप ये तो अगर आपने उसकी बात को कोट किया और रेफर नहीं किया तो इलीगल हो जाएगा। अभी एथिक्स की तरफ आने से पहले ही ये काम इलीगल हो जाएगा, आपके ऊपर बाकायदा जुर्माना लग सकता है। ठीक है। और अगर कोई अनपब्लिश वर्क है और वो भी बड़ी जबरदस्त बात लग रही है लेकिन वो आपकी नहीं है, आप उसको कोट करना चाह रही है, तो ये मोरली थोड़ा सा अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है कि भाई वो उसका काम है। अनपब्लिश वर्क जो होता है ना, उसको भी डेट के हिसाब से, या किसी लेक्चर को भी आप डेट के हिसाब से, एक प्रोफेसर का लेक्चर है ना, आप उसको डेट के हिसाब से कि उसने फलान डेट पे ये कहा था, आप उसको भी कोट कर सकते हैं। उसको सिर्फ कोट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर मैं कभी लेकिन ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं नहीं, नहीं रहा। मुझे पता है आपने नहीं सुना ना, हमने बिकॉज आई डिड माय मास्टर प्रोग्राम फ्रॉम जी यूएसए, तो हमने अपने प्रोफेसर्स को कोट किया था उसमें। तो फिर उसमें हम उनको डेट वाइज कहते हैं कि अब फिर कहते हैं कि इन हिज लेक्चर, तो चूंकि लेक्चर आमतौर पर कई दफा पब्लिश नहीं हुए होते ना, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जी अभी उस लेवल पे बेशक ना ही जाएं। जो ताहा ने पहली बात की तो वो ये है कि एवरी पब्लिश वर्क कैन बी कोटेड, जी जी क्योंकि हमने कोर्ट में जाहिर करना है कि फलां बंदे ने फलां बुक से फलां पेज नंबर पे ये कहा था।
अगर आप जी उसका सर। पेज नंबर नहीं देते, बुक का नाम नहीं देते, पब्लिशर्स का नाम नहीं देते, उसका ईयर नहीं देते, मतलब कब वो बुक पब्लिश हुई थी, तो फिर वो आपका अनऑथेंटिक मटेरियल हो जाता है और फिर आप यू कैन लूज योर क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल ऐसे। फरहाना, आर वी टुगेदर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ राइटिंग गाइडलाइन में क्या है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। यस प्लीज गो अहेड। सर ये जो पब्लिश वर्क होता है सर वो हम लोगों ने जैसे किया वो तो कोट करते हैं, क्योंकि समटाइम्स आप कोई खास प्रोटोकॉल जो फॉलो कर रहे होते हो वो वही काम हो चुका होता है, तो आप फिर वो रेफरेंस में डालते हो कि आपने जो है ना ये प्रोटोकॉल्स है, इन साइंटिस्ट का ऐसा काम था और वो आपने उनको फॉलो किया है कुछ ना कुछ हद तक। जी जी ठीक है, आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल ठीक। यस रुकैया, वांट टू से समथिंग? यस सर, मैंने ही कहा है ये। अच्छा, कोई और भी कुछ कहना चाह रहा था? दो हैंड से ना। फरहाना, उसका वो क्वेश्चन हो चुका था आई थिंक। Yes, sir. ओके I have noticed that Taha said something about that. This thing which I got that quotation of any यानी published होनी चाहिए proper way में, उसका आपको पता हो ओके। यानी उसने नाउ ये राइटिंग चीज़ गाइडलाइंस, ठीक है शाबाश। राइटिंग गाइडलाइंस इंट्रोडक्शन, इसके बाद ये आपका है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है आपके पास बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। इट्स लाइक ये जो मेरा पेज नंबर दिया ना, आपका और मेरा पेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, याद रखना। ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर स्लाइड शो करवाई है। इज दैट ओके? Okay, sir. ऑलराइट, इंट्रोडक्शन हमें पता है कि किस तरह से करना होता है, एंड देन लेट्स गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। ये इस पे जरा हम बात करते हैं कि आपके ख्याल में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी क्या है। यस मिस्टर ताहा, आई नीड योर इनपुट हियर अगेन। सर ये आई थिंक लिटरेचर रिव्यू का ही एक सामान्य सब पार्ट है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, कि आपके मोटिवेशन क्या है, वो रिसर्च की मोटिवेशन क्या है वो आपको बता रही है यहाँ पे। क्या वजह बनी कि आप जो है ये पर्टिकुलर रिसर्च करने पर आमादा हुए। Yes, background of the study. What transpired that you should do this study? That's the thing. हेलो फरहाना बच्चे, यस आपको सर। समझ आ गया कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में क्या लिखना होता है? Yes, sir. Yes, sir. में और जो चीजें पाई थी उसमें है the pronounce rationale as well, the key problem statement and brief overview of research questions। ये आपके बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का ही बेसिकली छोटा हिस्सा होता है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड का स्टडी, जैसा ताहा ने फरमाया कि बैकग्राउंड स्टडी जो है वो आपको बेसिकली मोटिवेट करती है कि व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू डू दिस स्टडी। क्या ट्रांसपायर हुआ था कि हम ये स्टडी करने पे मजबूर हुए। एंड देन इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम? हाउ डू यू डिफाइन इट प्लीज? Taha, tell us what the statement of problem is. सर ये हमारी मेन हेडिंग होती है जिसके अराउंड हमारी पूरी जो है रिसर्च चल रही होती है। यही हमारा मेन टॉपिक होता है। वो समझ लें कि आप, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ कि एक स्टेटमेंट में आपकी पूरी जो है वो रिसर्च की जो है वो समरी आ जानी चाहिए एक स्टेटमेंट में कि भाई मेन Yeah. मोटिव क्या है। ये इसकी बेसिकली हम बात पहले भी कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है जी कि ये प्रॉब्लम है, और वो उस प्रॉब्लम का जो
1 2 3 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम नंबर 2 भी हो सकती है, प्रॉब्लम नंबर 3 भी हो सकता है। लेकिन 2 प्रॉब्लम रख रहे हैं, एक पे भी रिसर्च हो जाती है, 2 या 3 से ज्यादा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। 2 पे अच्छा आपका पेपर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपने काम करना है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस पे आप इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकती है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो खुद एक वास्ट फील्ड है, कोई इससे और जैसे आप क्या इसको क्या वो करेंगे, मतलब क्या इसके यूज पे लिखूं या इसके साइड इफेक्ट पे लिखूं, क्या किस चीज पे लिखूं पहले? इसको पहले मजीद नहीं, रिफाइन करना हम पड़ेगा। मैं एक जनरल बात कर रहे थे ना, तो जनरल बात हम ये कर सकते थे कि जब हमने पाकिस्तान को डेवलप कंट्री के साथ उसको उसका मुआवजा किया, तो हमें पता चला कि यार हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो मतलब कि डेवलपमेंट में पीछे रहने की एक वजह थी कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। तो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि फॉर अस नॉट टू बी कंसीडर्ड इन डेवलप्ड कंट्री, one of the reason was because we are less developed. So the problem is information technology is not working as it is supposed to be working in the country, or information technology is not considered valuable in our country. So that's the problem. No problem. एक छोटे से लफ्ज में प्रॉब्लम को मैं आपके सामने बयान कर दूं। प्रॉब्लम एक इश्यू है, बस सिंपल सा एक मसला है जो हमने फाइंड आउट किया है। ये मसला है, इसके कारण, इसकी वजह से मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इसकी वजह से हमारी एजुकेशन ठीक नहीं है, इसकी वजह से मतलब हम साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहे। सो वी हैव फाउंड आउट द प्रॉब्लम कि देयर इज a problem that is hindering towards the development of our country. This is a hindrance. Okay. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल ऑफ द स्टडी और रैशनल ऑफ द स्टडी। ये क्या होता है, किसी को याद है? हेलो। बेसिकली रैशनल क्या होता है? रीजन। यस सर। और रैशनल जो है उस ये जो हमने प्रॉब्लम जो फाइंड आउट किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसको हमने आंसर करने का उसको उसको रिस्पॉन्ड करने का उनको तरीका बताना है कि ये रीजन है और इसको हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ना। your thesis. So it refers towards the justification of your study, कि मैं justify कर रहा हूं कि इस वजह से मैं इस रिसर्च को कैरी ऑन करना चाहता हूं। तो आपका जो पॉइंट होता है ना, आप उसको जस्टिफाई करते हैं रीजन के साथ कि दिस इज द रीजन and I'm going to justify it that this research is adequate to be taken care of or to be carried out. Any addition, please? Any addition? Sorry, that's your class, huh? It's going on or okay. अजान हो रही है, थोड़ी देर चुप हो सकते हैं प्लीज?
Okay, research objectives. Now, research objective describe what research is trying to achieve. कि जो आप अपनी रिसर्च में अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उसको आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो बयान करते हैं. And also your objectives are going to explain why you are pursuing what you are pursuing. ऑब्जेक्टिव्स ही आपको एक्चुअली बता देते हैं कि इस रिसर्च के बाद जो आप परसू करना चाह रहे हैं इसके बेनिफिट्स लोगों को ये मिल सकते हैं और ये रिसर्च इस काबिल मतलब के पढ़ने वालों को या टुवर्ड्स मतलब इसके फैक्टर्स में है कि जो इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे कि कुछ ना कुछ नया जो है हम नई चीज मतलब मार्केट में मुल्क में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिसके अभी मतलब रेलेवेंट आप काम कर रहे हैं उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी जो रिसर्च है इसका किसी न किसी को फायदा हुआ है. Then we're talking about the research questions. रिसर्च क्वेश्चन भी जो है ये बताते हैं कि जो कुछ ये किया जाएगा इसका जो है ओवरऑल जो आउटकम है वो ये होगा जब आप रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करेंगे. Taha, can you explain to me the exact definition or can you define it to me research questions, please? सर रिसर्च क्वेश्चन में ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन रेज किए हैं और उसके आपने कैसे जवाब दिए हैं. तो जवाब तो नहीं लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आपका एम्फेसाइज है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या तहफ्फुज़ात या आपकी रिजर्वेशन थी वो क्वेश्चन बना के आपने उसके ऊपर रिसर्च की और फिर आप जो है वो अपने जो कंक्लूजन है वो पेश करेंगे. तो रिसर्च क्वेश्चन ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो आपका स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च थी उसके ऊपर आपने क्या क्या क्वेश्चन उठाए. जी जी बोले बोले शाबाश. हाँ जी थोड़ा जी. सा और बताएं. रिसर्च क्वेश्चन जो है ना आपके जो ऑडियंस हैं जो रीडर्स हैं उनको एक्चुअली एक डायरेक्शन दे देता है कि ये बंदा इसके पास ये क्वेश्चन है और हमारा ये ख्याल है कि इसने इन क्वेश्चन का आगे जवाब दिए होंगे और ही मस्ट हैव ट्राइड टू आंसर हिज क्वेश्चंस. हेलो. यस सर ऐसा ही है. ऐसा ही है ना. बिल्कुल डायरेक्शन मिल जाती है. Exactly. ये एक्चुअली आपको एक डायरेक्शन नाउ यू कैन वर्क ऑन दिस डायरेक्शन. Research question actually help you to carry out your research. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा इसके बाद है delimitations of the study. How do you define delimitations here? ना बच्चे आपको पता है इसके बारे में कुछ? If you know, please can you explain to us, please? Delimitations. Yes, Delimitations sir. of the Am study. I audible? Yes, yes, you are. Please, thank you so much. Yeah, हम बात करना चाह रहे हैं delimitations. आपके जो पेपर में delimitations होती हैं उसको क्या उनका फायदा है, कैसे उनको आप डिफाइन करते हैं? Sir, delimitations delimitations में आई थिंक जो हमें उसमें बाउंड्रीज बताई जाती हैं जो भी हमें रिसर्च करना वेरी होता गुड. है ठीक है. रिसर्च स्टडी में. तो फिर उसमें हम वो डिसाइड करते हैं कि उसमें हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या what to exclude and what to include, I think, because the Yeah. meaning is already there, delimitation, so that's why या हम ये भी delimitation कह of this. सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स हमने सिर्फ मतलब एक ही कॉलेज में से 2 क्लासेस को लेके उन पे हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की है. हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस
और मतलब कि फाइनेंशियल इश्यूज और मतलब जो भी आपने आपके लिमिटेशंस हैं उनको आप डिलिमिटाइज करते हो, नैरो डाउन करके आप चीज़ों को बयान करते हो कि इसकी वजह से मैं इतना ही कर सकी हूँ, ताकि जब आप डिलिमिटेशन नहीं लिखते, डिलिमिटेशन को डिस्क्लेमर भी कहा जाता है। आपने पढ़ा ना ये टीवी चैनल पे डिस्क्लेमर कि भाई इसमें जो इसके सारे किरदार हैं वो क्या उनको कहते हैं, यस सर, ड्रामा स्टार्ट होने से पहले या real, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आती है ये स्लाइड। या वो डिलिमिटेशन जो होती हैं, क्योंकि वो पहले से बयान कर देते हैं कि ये जो बेस करियर स्टोरी पे नहीं है या फिक्शन है, ताकि कल को कोई बंदा ये उन पे क्वेश्चन ना उठा सके कि जो कुछ आपने कहा था वो गलत कह दिया था। वो कहते हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि इट्स नॉट, इट डज नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी और द फैक्ट और ट्रू स्टोरी। तो डिलिमिटेशन बयान करना अच्छा होता है कि आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे आप वो नहीं कर रहे, ताकि कोई बंदा कल को आपको डिफेंस में या जो भी कोई क्वेश्चन पूछे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि आई हैव रिटन दिस थिंग और दिस इशू और द आंसर टू द क्वेश्चन इन माय डिलिमिटेशंस। क्लियर? अच्छा जी, now let's talk about the chapter number 3. Chapter number 3 talks about research methodology. Research methodology includes instruments of the study, research design, research variables, data analysis, research procedures, population, sampling techniques, research instruments, and instruction program. और आपका कुछ different भी हो सकता है। ये basically कुछ चीजें मैंने अपने thesis से उठाई नहीं है, तो मतलब जो तरीका कार है वो यही है, लेकिन तो भी मतलब आपको ये लिखना होता है, आपके ये चैप्टर नंबर 3 में आता है। रिकमेंडेशन आ जाएगी, चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाएगा जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, डाटा कलेक्शन, जिस तरह आपने किया उसकी इंटरप्रिटेशन दे दी। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अगर कोई मांगता है, नहीं भी मांगता तो फिर आपने रिकमेंडेशन बता दी और फिर आपने उसमें अपना सारा जो है जिस तरह हैंडल किया उसको वो बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिटरेचर व्यू, why you should write a literature review. Consideration of prior relevant literature is essential for all research disciplines and all research projects. When reading an article, independent of discipline, the author begins by describing previous research. ताहा ने कंट्रीब्यूट किया था कि जो पहले रिसर्च हो चुकी होती है, आप जो आपने टॉपिक चुना है उसके बारे में, तो आप उनको बयान करते हो कि इस मेरी रिसर्च से पहले भी कुछ रिसर्च हो चुका है, सो let me go and find out what the people say. The research area to motivate the aim of the study and justify, ये बड़ा जरूरी है, research questions and hypothesis. हमने रिसर्च क्वेश्चन को और हाइपोथेसिस जो हमने वहां पे बयान किए हैं उनको हमने जस्टिफाई करना होता है अपने लिटरेचर रिव्यू में। दिस इज जनरली रिफर्ड टू एज लिटरेचर रिव्यू। theoretically framework or research backed research methodology, as with any other research, follow proper steps need to be followed and action taken to ensure the review is accurate. ये बड़ी बात है। Farhana, can you read the last statement, please? Yes, sir. Follow proper steps से पढ़ना है आपने। Hold on, let me just do this. पर लास्ट पैरा आपने कहा है ना, दिस इज जनरली Wait a moment. अब पढ़ें। Follow से पढ़ दे please. Follow proper steps need to be followed, and so there is something error is there. Followed in action taken to ensure the review is accurate, precise, and trustworthy. Why you should write a literature review? Conservation of prior relevant literature is essential for all research disciplines and all research Yeah, that's projects. okay. आखिरी से पढ़, ठीक है बच्चे, very good. All right, go ahead.
when reading an article independent of discipline, the author begins by describing previous research to map and assess the research area to motivate the aim of the study and justify the research question and hypothesis. Very good. Yes, hypothesis. तो हमने justify करना होता है कि जो कुछ हमने hypothesis में बयान किया था, रिसर्च क्वेश्चन प्लेन कर रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करें कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to respond to the research questions. Now, proper steps needed to be followed and action taken to ensure the review is accurate. जो हमने रिव्यू किया है वो accurate है according to the research questions and hypotheses. And precise भी है. लंबा इतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. Just write to the point. Precise करें. And also trustworthy. कि जो कुछ हमने किया है वो trustworthy है. Fake काम नहीं है. किसी का काम हमने उठा के नहीं दे दिया. रिसर्च जो है हमारी अपनी रिसर्च है. Genuine work है आपका. हमेशा याद रखें इस बात को. बच्चे जब आपका genuine work होगा तो तभी आप किसी से बात कर सकते हैं कि this is what I think. And this is how I have conducted this. And I believe that whatever I have tried to say, I can justify it. And I think it's based on my research work. Perception भी कह सकते हैं. Literature review. Okay. Any questions so far? Please, any question? लिटरेचर रिव्यू के बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो, पिछले बैकग्राउंड स्टडी के जो हमने चीजें डिफाइन की उनके बारे में कोई क्वेश्चन हो, would you please ask me or would you contribute anything? Sir, I want to ask something about you about that thesis. That can you give us any sample or anything so can we prepare ourselves to make this thesis easier for ourselves? जी मेरे पास बहुत सारे सैंपल पड़े हैं. मैं कोशिश करूंगा कि लेकिन नहीं आपको पूरा थीसिस भेजूंगा तो वो फिर इशू ना हो जाएगा. और सर one thing more, I want to tell बोले you that प्लीज. जो असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किया ना उसके अंदर जो भी यानी कि उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी है उसको आप काइंडली अपना रिव्यू उस पे कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है फिर मैं उनको ओवरकम कर लूं. बेटा कोई बात नहीं, उसको मैं उसको रिव्यू करके ना तो उसके पॉइंट्स बना के तो पेज पे बना के आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. वो Yes sir, व्हाट्सएप I will go ahead because you know that in future I will be careful about these type of mistakes. हाँ वो अच्छा. नंबर 1 है कि जो आपने पैराग्राफी करनी है उसको जरा थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि आप देखिए बात पता है क्या है. वो कल हमारे प्रोफेसर बैठे थे, हमारे जो कोलीग हैं उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है इस लेवल पे टीचिंग ट्रेनिंग पे बहुत ज़रूरी है, इसका क्या आप देखते हो कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है. तो मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए आज हम रिसर्च करेंगे एज टीचर्स तो कल अपने स्टूडेंट्स को बता सकेंगे ना. हेलो. Yes, please. Rukaiya, any question from you? Need to share the assignments. Actually, I didn't have any link or any. Hello? Sir, Rukaiya, आप assignment जी बोले बेटा. yes sir, assignment किधर शेयर करनी है सर? क्योंकि असाइनमेंट तो मेरे पास भी रखी हुई थी लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि शेयर किधर करनी है. अच्छा वो एक्चुअली वो चूंकि मेरी असाइनमेंट तो वो मेरे पर्सनल पे भेज देते या आप व्हाट्सएप पे कर देते तो मैं उसको प्रिंट कर. मैंने फरहाना की भी प्रिंट आउट की थी असाइनमेंट ना. हाँ आपने भी कहा था कोई कोई मेरा ख्याल आपने टॉपिक चूज किया था. यस सर. वो बेटा उस पे भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें. अगर आपको डर लगता है तो मेरे सिंगल नंबर पे भेज देना. नो सर मुझे कोई इशू नहीं बट है. फरहाना ने ईमेल किया था मुझे. नो सर होल्ड ऑन, व्हाई डोंट या फरहाना ने ईमेल किया था. रुकिया बेटा मुझे ईमेल कर दे. सर एक्चुअली मैंने यही देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो किसी की भी शेयर नहीं हुई हुई थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि कहाँ शेयर करनी है, तो आपका ईमेल आईडी नहीं है मेरे पास.
अगर काइंडली वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा तो फिर मैं शेयर कर No दूंगी। problem. I will. Yeah. By the end of this lecture, I will just send you my email address, and then yeah, you should email me. क्योंकि मैं, मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, मतलब कि आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उस पे मेरे खास तवज्जो है कि हमने उसको फॉर्मल स्टाइल के हिसाब से पेपर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन क्या है हमारी असाइनमेंट की, ताकि आपको आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, क्रिटिकल राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएं। हेलो। यस सर, यस सर। या फरहाना, आपने भी कोई क्वेश्चन करना था बच्चे? सर बस ये आपसे असाइनमेंट का कहना था कि जो है उसके अंदर जो भी रिव्यू है उसको काइंडली अगर वो हो जाए, और अभी क्लास फिनिश होने के बाद ये जो जो भी साइट्स वगैरह होती हैं, हमें अगर उसका एक प्रॉपर वे में सेंड हो जाए तो फिर हम उस पर वो मतलब रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इस तरह से देखती हूँ क्लास आप तो ऐसा मैं करें, ऑन जॉब मेरी बात सुने, एक मुझे ना, आप अब सब लोग, मैं अपना आपको ईमेल करता हूँ, आप मुझे कल तक ईमेल सारा आपने एक टेस्ट ईमेल भेजो, और मेरा मैंने एक थीसिस किया हुआ ना अपना, मैं आपको ना उसका सैंपल भेजता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ो गौर से। ठीक है सर। हाँ, वो एक अब सैंपल आपके सामने होगा, फिर आपने उस सैंपल को अपने फॉलो अप करना है। और इस मतलब वो सैंपल सबसे बेस्ट नहीं है, मैं ये समझता हूँ, किसी का भी वर्क सबसे बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में बड़े लोग बैठे होते हैं, आप मुमकिन है कि उससे ज्यादा बेहतर कर सकते हो। आई बिलीव सो यू कैन डू इवन बेटर जॉब देन द वन आई डिड, लेकिन ये कि हमें वो एक डायरेक्शन मिलेगी कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इज दैट ओके? हेलो। I can give you uh, some time for break. You can go for 5 minutes break, and then we can come back together. Thank you. 5 मिनट की ब्रेक ले लें? यस सर, थैंक यू। Yeah, please. Thank you.
Okay. Is everybody back? Yes. Okay, thank you so much. Now, in this half, I have some new things that we're going to study in future, but I want us to just make mention about these things. And then I want your contribution. And also, if you want to write your assignment, that would be like for 5 pages assignment. Education psychology. If you are to write on education psychology, what things can you bring in to justify your answer? And give me the key concepts in educational psychology, and also applying psychological principles to enhance learning outcomes. So we also look into the outcomes of educational psychology. So first of all, according to your understanding and your knowledge or information, what is educational psychology? So it is the knowledge that in which we study how the human learns and retain the knowledge or implement the knowledge. Okay. And what could be the key concepts in educational psychology? Hello? Yeah. Hello, sir. Can I talk? Yeah, Steve, please go ahead, please. Okay. When we talk about education psychology, we're trying to talk about humans, how humans really think within their knowledge, and especially like the classroom, for example. Very good. Excellent. It has to be with the teacher. Okay, hello? Hello? Steve, Ma'am Shimala is teaching, so can you come out from the class, please? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you now. Yeah, it is about how the human brain works when we talk about education psychology. That is, for example, the classroom setting. We talk about the teacher, the knowledge, and to the students. Okay. Yes, sir. All right, very good, thank you. Yeah, Farhana, how do you define educational psychology? रुकैया बच्चे, आपके ख्याल में एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? Yes, sir. As I have said earlier, that it is the study of how human learns and how they implement their knowledge. आपको क्या लगता है कि कल जब आप टीचिंग पे जाती हैं, या इफ यू आर ए टीचर इवन एट द मोमेंट, आप अपने स्टूडेंट्स पे इसको किस तरह से देखते हैं? हाउ आर यू गोइंग टू, I don't want to like apply, but okay, let's say apply education psychology on your students in your classroom. क्या है वहां पे क्लासरूम की साइकोलॉजी? क्या है? आपके पास 12 से 15 साल के बच्चे हैं. How do you understand their learning psychology or education psychology, the level of their mind, and how do you understand the psychology of their learning?
आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं? सर एक्चुअली यही डिफरेंस होता है कि जो डिफरेंट एज ग्रुप, एक जो एज ग्रुप है ऑलमोस्ट वो एक ही क्लास में जो है वो लाई तो करते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो डिफर करती है। तो इसमें हमें यही देखना इसमें हमें यही पता चलता है कि अगर जो है वो कोई बंदा जो है वो बहुत किसी एक चीज में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और कोई जो है वो उसमें नहीं कर रहा, लेकिन वो शायद किसी और चीज में परफॉर्म करे, तो डिफरेंट एक तो हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी हर फील्ड में डिफरेंट होती है। स्टूडेंट में Hello? Yes, Steve, you want to say something? Yes, sir. When let me move outside, sorry, 1 minute. I was looking at development psychology. Now, what do we mean by development? How do we understand this educational psychology? You have to develop the student. Now, we have to look at motivation. Okay. Yeah, motivation is also a system. Then we also have to look at lifelong education, how to put them in the process of education. So these are some of my few points I think I understand, sir. So my question to all of you, then why do we do lots of comparison in terms of writing the intelligence of the students in the class, whereas के psychology कंपैरिजन है वो क्यों है, और कहाँ तक अगर हम करते भी तो कहाँ तक वो दुरुस्त है? Need your feedback, please. जैसा कि किसी ने कहा था कि एक बच्चा किस पाक स्टडी में या सोशल स्टडी में अच्छा नहीं, but what yardstick should we use to measure up the intelligence of the student in this I mean in a classroom setting? सर इसमें फिर साइकोलॉजी में फिर बिहेवियर्स भी आ जाते हैं कि आ अगर जाता है, एग्जैक्टली बिहेवियर आता है डेफिनेटली। जैसे अब अगर समटाइम्स if anyone has the ability but he is not trying to do, ये एक अलग एक्सपेक्ट है, और समटाइम्स जो है वो एबिलिटी जनरली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो ये बिहेवियर्स को भी शायद समझने में हेल्प आउट करता है। हाँ, या बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि अगर एक बच्चा वो मतलब अपना तो जैसे काम ही नहीं कर रहा, तो फिर इसके मतलब हमें कुछ ना कुछ तो एज टीचर्स हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, जैसे कि आप मॉन्टेसोरी में पढ़ते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड हो या कुछ ऐसा हो जिससे बच्चे की अट्रैक्शन लूज ना हो, उनकी attention loose now. They should be in the class like alert and active all the time. Yeah, hello. Yeah. One of the setting I was looking at was Yes, Steve, go. Yes, cooperative learning. That is bringing everybody, all the students together, like giving them a form of presentation activities. That way can really help the education psychology settings. Another one I was looking like you have to engage the students in all activities in order to bring them out. Then you have to do what we call assessment to assess them what have been done. Then we develop them, motivate them. Then individual differences among the students will be very vital. And then we also look at the theories which has been set up.
These are Okay. the way I see about educational psychology settings. Okay. Yeah, anybody else? Mr. Taha, are you gone? I think he's not here. Yeah, Farhana, आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? Would you like to say something about educational psychology? Sir, am I audible? Yes, please, you are. Yes. Sir, in एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है हम ह्यूमन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी is we can say that educational psychology is the study of how human learns and retain knowledge, and in educational setting like classrooms, this includes their social, emotional, and cognitive learning process as well. And Yeah, one of my cognitive friend, learning, exactly. she's doing. बोलो. But also we can say that ADHD, different type of this program, because recently my friend, she told me that she's doing something in this field, which is called ADHD. So she told me that this is about educational psychology. Okay. Yes, Mr. Taha. Sir, I just joined after the break. कोई बात नहीं, ताहा हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है और हाउ डज इट लाइक work in the same class on different students. क्योंकि एज ग्रुप सबका एक ही हो तो फिर ये हम किस तरह से इसको बयान करते हैं, वहां पे क्या इसका रोल है कि ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको कहाँ तक हम समझ सकते हैं? सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या था आपका एजुकेशन साइकोलॉजी को. आई डोंट गेट द क्वेश्चन एक्चुअली. क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, और फर्ज करें आप एक क्लास में जाते हैं, मिडिल क्लास की क्लास है, फर्ज करें 7th ग्रेड की, तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी को किस तरह से आप अप्लाई करें, कैसे जानेंगे कि फलां बच्चा जो है वो ज्यादा उससे ज़हीन है? फर्ज करें एक एग्जांपल आई थी कि एक बच्चा मैथ में अच्छा है, उर्दू में नहीं, उर्दू में अच्छा है, इंग्लिश में नहीं, तो हम उसका उन सब बच्चों का इंटेलिजेंस से किस तरह रेट करते हैं कि हम कहते हैं फलां तो बड़ा इंटेलिजेंट पर दूसरा नहीं है, जबकि कोई बच्चा दूसरे में इंटेलिजेंट हो सकता है। तो जो जो कंपैरिजन करते हैं इसमें आके, तो साइकोलॉजी में जब हम जाते हैं तो फिर उस कंपैरिजन को किस तरह से हम देखते हैं और हाउ कैन यू ब्रिंग इट आउट? सर सबसे तो मैं स्टूडेंट खुद कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से ठीक फिर है, अपना अपना लेक्चर या अपना जो भी मोड ऑफ टीचिंग होगा वो डिसाइड ठीक करते हैं. है, और ऑब्वियसली हर जगह तो कोशिश टीचर की होनी चाहिए कि जो सबसे लीस्ट एप्टीट्यूड होल्डर बच्चा है आप उसके हिसाब से टीच करें. तो जब अगर उसको बात समझ आ जाती है तो ऑब्वियसली पूरी क्लास को समझ आ जाएगी. और दूसरा ये है कि सबके इंटरेस्ट लेवल भी अलग होते हैं. तो आप अगर सबको मैथ्स पढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनका इंटरेस्ट लेवल डेवलप करें, उनको इनकरेज करें, उनको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दें. ऐसे नहीं कि आती साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर दें या आती साथ उर्दू के जुमले बनाना या कहानियां बनाना शुरू कर दें. पहले उनको बताएं तो भाई कि वजह क्या है, आप क्यों इस क्लास में बैठे हुए, आपको एजुकेट क्यों किया जा रहा है. उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, क्योंकि बगैर इंटरेस्ट के कुछ भी आप नहीं सीखते, तब तक बच्चा रेडी नहीं होगा ना, आप उसको टीच कर ही नहीं सकते. तो उसकी साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है वहां पे. और उनको हाँ, आपके वहां पे होने शाबाश, का भी जी, मतलब कि वहां पे टीचर क्यों खड़ा हुआ है, क्यों उनके पास आया है, या आपसे ये एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, वो सब उनको आंसर करें ताकि उनको समझ आए. अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ, आजकल जो है वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो क्यों स्कूल आ रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता, बस एक कस्टम बना हुआ है कि अगर वो नहीं करेंगे तो लगता है सोसाइटी के पीछे रह जाएंगे. दैट्स व्हाई ये कर रहे हैं. वजह उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, बस एक रटी रटाई बात चली जा रही है.
तो साइकोलॉजी में यही बात होती है कि भाई उनको बताए कि जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं क्यों गुजार रहे हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, साइंस क्यों जरूरी है, तो फिर वो Very थोड़ा सा good, thank you. इंटरेस्ट। I think most of you have contributed. No, the next topic, the subtopic that I want us to understand is uh, how do you differentiate between student-centered learning and teacher-centered learning? What is the difference and how can you blend them together? And how do they play their roles in terms of learning? So which one would be better? Student-centered learning or teacher-centered learning? Or and then हमारा traditional क्या था? What was the conventional way of teaching or learning in Pakistan? इसमें बात सर करिए। कन्वेंशनल तो मेरे ख्याल में कि वो टीचर सेंट्रल ही था पहले, लेकिन अच्छा। जो जो टीचर कहेगा वो हम सुनते रहते थे, अदब करना है, आप क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत कम करना है। तो अब मेरे ख्याल से अब जैसे 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 सोशल मीडिया का दौर आना शुरू हुआ है, तो अब बच्चों को समझ आनी शुरू हो गई है। तो अचानक से जो ये We चेंज need आया, your input as well. अब उनको आप सेटिस्फाई करना मुश्किल हो गया कि आप बच्चों को बताएं, वो आपको क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो अब आपका जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर हो गया कि अब आपको उस तरह से अपनी टीचिंग स्टाइल को डेवलप करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो है ना वो रिकॉग्नाइज करें। पहले तो टीचर जो कहता था वो माननी पड़ती थी ना, क्योंकि पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन हुआ होता था कि बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता था। तो अब जो है वो भाई उल्टा ही हो गया, तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। Yes, she wants to say something. Yes, student learning and teacher learning. Yeah, both are very nice, but the teacher learning is very much high because we learn every single thing today in the world from our teachers because they are our teachers. They first learn before us and they are impacting the knowledge in us. So when it comes to education, we really need to look at some certain things. Students perhaps may not have what we call teaching style. They may not have a certain style to impact the knowledge into our heads. And so one where teachers are very, very vulnerable is the authority of the lecture style. That is one thing we need to look at. Then we look at the way the teacher facilitates or the activity style, the delegates, the hybrid styles, and all these things are the ways of teachers, which students do not have. So this is the way we learn. So I think and prefer teaching teachers, yeah, style. Okay, thank you so much. फरहाना, बच्चे क्या बेहतर है, किधर हैं हम लोग पाकिस्तान में? यस सर, पाकिस्तान में तो हम मतलब बहुत दुनिया के मुकाबले में तो काफी चीजों में पीछे हैं। और जहाँ तक टीचर लर्निंग की बात है तो टीचर लर्निंग जो है वो टीचर की जो लर्निंग होती है यानी उसको अपने No, hold on. No, करिकुलम no, wait. The question was student-centered learning या teacher-centered learning है? यस सर। नहीं, वो हमारा जो कन्वेंशन होता है कि टीचर्स सेंटर्ड लर्निंग थी हमारी, कि जो कुछ हमने टीचर ने बताना है सारा कुछ टीचर के पास ही है। हमने जाके पैसे वो के क्लास में बैठना है, टीचर बातें करता है 45 मिनट से, वो किसी का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेता, वो करता जाता है क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है। तो जो नया दौर आया है, क्या आज भी वही जो मेथड था वैलिड है, या कि स्टूडेंट लर्निंग जो सेंट्रल लर्निंग है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है? उसका रोल क्या हो सकता है आज की सोसाइटी में, और वो कितना ज्यादा मुस्तफीद है? नहीं सर, अब तो काफी कुछ चेंज हो गया है। अब इवन के गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अब जो लर्निंग हो गई है वो पहले वाली लर्निंग नहीं रही है, अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है। तो उसमें जो है जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे पहले टीचर जब हम सुना करते थे अपने बड़ों से कि वो टीचर्स जो है वो स्कूल्स में बैठ के वो जो है डिफरेंट उनके काम हो रहे होते थे, निटिंग चल रही होती थी, तो ये चल रही होती, तो वो बच्चे जो है उस वक्त
टीचर्स के मोहताज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा यानी कि मॉडर्न वे भी बहुत जगहों पे अप्लाई हो रहा है कि मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होती है बच्चों को, मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जा रही है, उनको रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, उनको मतलब बताया जाता है कि आप ये इवन कि अगर वोकैबुलरीज भी हैं तो आप सर्च करें उसको कि मतलब वर्ड सर्च करें, या जो भी है इस टाइप की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग घर से करके लाएं, या अपने बेस पे जो है आप उसको सर्च करें। पहले के मुकाबले में अब जो है काफी ज्यादा फर्क आ गया है, पाकिस्तान में भी इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है कि अब वहां पे भी काम हो रहा है, पहले के मुकाबले में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन हो रहा है। लेकिन अब पहले वाली नहीं है लर्निंग, अब चेंज हो गई है स्टूडेंट लर्निंग भी। So आज जो learning है वो almost it is shifting from teacher-centered education learning towards student-centered learning. ये हम बात कर रहे हैं, मतलब चेंज आई है इसमें. Yeah, So there's a shift yeah, that is actually visible. yes. तो और वो अच्छा, पहले वाले जैसे दौर में स्टूडेंट जो है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को आंसर बता दिया करते थे कि आपने जो है ये इसका मतलब ये निशान लगा लें, यहाँ से यहाँ तक जवाब होगा, ये इस टाइप के जो होते थे। अब थोड़ी मतलब उसमें चेंजिंग आ गई कि स्टूडेंट को थोड़ा सर्चिंग के लिए टाइम दीजिए कि पहले आप इसको रीड आउट करें, क्या है इसके अंदर, इस पैसेज के अंदर क्या बताया जा रहा है, उसको फिर आप क्वेश्चन के आंसर कहाँ है आप उसको खुद सर्च कीजिए। मतलब बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। मेरे ख्याल इसमें एक और भी इवन बात मैं गूगल। करता चलूं कि पहले एक ये भी दौर था कि जो टीचर का आंसर होता था ना वही दुरुस्त होता था और उसके आगे पीछे नहीं आप यस। जा सकते. अब हाँ. सर और भी, यानी जी बोल. कि इवन हम बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। पहले वाले जो टीचर थे, अगर उस्ताद को यानी कि उस्ताद अगर उन्हें कुछ कह भी देता था तो पेरेंट उससे कुछ कंप्लेंट नहीं करते थे, वो कहते थे, हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए कि वो हड्डी तुम्हारी और खाल, वो कुछ इस तरह का वो बताते थे, हड्डी बोटी वाला। वो उस वक्त मेरे दिमाग हाँ. में नहीं आ रहा कि हड्डी तुम रख लेना और गोश्त हमें दे देना, कुछ इस तरह का वो कहा करते थे। लेकिन अब तो वो साइकोलॉजी को लेकर इतने सारे वो इशू बन जाते हैं कि नहीं, ये चीज जो है ना वो चाइल्ड साइकोलॉजी में आती है और ये ठीक भी है। लेकिन पहले एक शायद वो कुछ एक रिस्पेक्ट टीचर की, और वो कुछ जरा टीचर जो पढ़ाता था उसकी बात जो है वो पत्थर पे लकीर होती थी। लेकिन अब तो वो जरा सी बात कुछ टीचर शाउटिंग भी कर दे या कुछ कह दे ना ना, नहीं 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 नहीं, ये चाइल्ड साइकोलॉजी में आ जाता है, आप उसको कुछ शाउट नहीं कर सकते, बच्चे को वो इस तरीके से ले लेगा। यानी अगर हम सोचे ना तो ये बहुत सारा टॉपिक जो है ना बहुत वास्ट है ये। बट फरहान, देखिए टाइम के साथ साथ चेंजिंग आ गई है। आपको क्या लगता है कि फिर आप कहाँ कहाँ पे फिट होते हैं और इसका जो हम कहते हैं कि एक्सट्रीम जो है पेंडुलम की, शुड इट गो टू लाइक टीचर साइड और स्टूडेंट साइड, और इट हैज टू बी पेंडुलम हैज टू बी समवेयर इन द सेंटर कि भाई 50% स्टूडेंट्स करें एंड 50% मस्ट बी लाइक फॉर टीचर्स, student participation and teachers contribution as well. So what percentage would you just create? कहां तक हम कहते हैं कि उनकी दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? जी फरहाना. सर दोनों ही की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग होती है स्टूडेंट और टीचर दोनों की, यानी कि दोनों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब तक स्टूडेंट को टीचर इन्वॉल्व नहीं करेगा तो फिर उसके अंदर लर्निंग तो फिर कंप्लीट ही हो पाएगी। जाहिर सी बात है टीचर को स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा अपनी स्टडी प्रोसेस में। Yeah. और जो चीज रूल के हिसाब से है, जो चीज हमें चाइल्ड साइकोलॉजी में बताई, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बताई जा रही है, हमें ऑब्वियसली उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और हम करते हैं। लेकिन इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जाहिर सी बात है एक रूल्स के तहत एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज चलती है, फिर उसके तो फिर बात ही अलग होती है ना, उसके रिजल्ट ही अलग होते हैं। हाँ. तो फिर आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन द लर्निंग process, it can actually play an important role in terms of education? यस सर, ऑब्वियसली। Okay. Any other input from anyone about
The student-centered learning and the teacher-centered learning. Any difference if you want to bring in? Yes, sir. होनी चाहिए सर, दोनों दोनों मेथोडोलॉजीज अप्लाई होंगी तो ही जो है वो हम मैक्सिमम रिजल्ट्स और आउटपुट्स गेन कर सकते हैं। ओके, दोनों दोनों की इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है। मतलब टीचर ये ना समझे कि आई हैव गॉट लाइक एवरी पावर एंड ऑल द पावर दैट व्हाटएवर आई से आई हैव गॉट अथॉरिटी, और मैं किसी दूसरे की बात ना सुनी, एंड द स्टूडेंट मस्ट बी ओबीडिएंट टू मी। लेकिन अब उसको उस ककून से बाहर निकल आना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि नहीं, आपकी बात भी वैलिड हो सकती है। यस स्टीव, गो अहेड प्लीज। Okay, sir. One of my inputs, teachers learning and student-centered learning. Teacher does most of the talking in classroom in order students to remain quiet. Teachers direct all learning students and do not learn how to collaborate. Students' mind may wander out of bedrock, but students do not express their learning in a way of their choice. So focus mostly on instructor, monitor, working environment, instructor, topics, and evaluate students' work. That is a teacher-centered learning. Then when we talk about student-centered learning, we talk about asking questions, completion of tasks, perhaps group or independently. Show more interest and precipitate because of the interaction. Classroom may be noisy or some way or somehow, but they will manage it in all different tasks, which can be challenging sometimes for both teachers and students. So students evaluate their own learning. Students learn from independent learning tasks and from each other. So this is the type of teacher-centered learning and student-centered learning. Thank you. All right, thank you. Yes, Farhana. Did you still want to say something? So the assignment that I'm going to give you is applying psychological principles to enhance learning outcomes, or the key concepts in educational psychology. इस पे हमने असाइनमेंट लिखनी होगी। 2 टॉपिक हैं, आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, उस पे लिखना है। I will actually send this topic into your group. Okay? ताहा थोड़ा सा आपसे कंट्रीब्यूशन चाहिए इसका, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का और टीचर सेंटर लर्निंग का। अब हम टीचिंग का तो वर्ड इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अब वो टाइम चला कि जब हम कहेंगे I want to teach you, अब हम ये कहते हैं कि I want to study with you and then let's learn together. That's a term that we use nowadays. Exactly, यही है। और मेरे ख्याल में जब स्टूडेंट लर्निंग, आपने जो बोला पेंडुलम शिफ्ट जा रहा है स्टूडेंट की तरफ, तो यहाँ पर टीचर जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वो एजुकेटेड है, तो उसको चाहिए कि वो भी नए मेथड इसी के मुताबिक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो रही है, तो आप भी नए मेथड अप्लाई करें कि अपने आप को सिस्टम में फिट करें और पेंडुलम की जो स्विंग अपनी तरफ भी लेकर आए, ताकि बैलेंस मामला हो। जाहिर सी बात है, बच्चे की तरफ अगर सारी ड्राइविंग सीट आप बच्चों को दे देंगे तो वो क्लास को सही से या कोर्स कंप्लीशन जो होती है या कॉन्सेप्ट वो जो नहीं कर लर्निंग होती है नहीं कर पाएंगे। तो आप, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ज्यादा नॉलेजेबल है, इसके हमने बात की, तो बिल्कुल सही बात थी कि लेकिन 100% इधर नहीं होना चाहिए। आप जब आप स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप भी अपने आप को फॉरन से इसी तरह से सिस्टम में अडॉप्ट करवाएं, अपने आप के अंदर जो वो चेंजेस लेकर आए, आप एक्सेप्टेबल हो स्टूडेंट को, और फिर उस तरीके से उनको उनके महसूस भी ना हो कि आप इसीलिए इसलिए मेरा ख्याल ये भी बेहतर टर्म है कि हम कहें कि हम तो आजकल सिर्फ फैसिलिटेट करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको इम्पोर्टेंस है, आप उनको इम्पोर्टेंस है, उनको पता भी ना चले, उनको महसूस भी ना हो कि आप उनको ड्राइव कर रहे हैं, उनको लगे कि वो ड्राइव कर रहे हैं फोर्स, लेकिन एक्चुअली में आप कर रहे होते ड्राइविंग फोर्स। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मामला हो जाएगा।
तो उनको इम्पोर्टेंस दें, बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उनको बताएं कि भाई आप ही सब कुछ हो, आपके मुताबिक चलेगी। लेकिन जैसे हम छोटे बच्चों को बहला फुसला के अपने ही काम करवाते हैं, वैसे ही जो है स्टूडेंट्स को बड़े स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है कि उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको बताएं कि भाई आप ही की मर्जी चल रही है, आप ही की तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन करना आपको अपनी तो है। हमारे especially let's talk about in our own context. You in our context in our country in Pakistan, what do you think? You think this kind of mixed approach or methodology can work for us in this country? Yes, sir. I think it can work because the students are always ready to accept what teacher says. So I think it can be implemented, and it will be a very fruitful plan. Okay. Anybody else who wants to contribute something? यस सर, जैसे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं सर, वो अपने स्टूडेंट की जो बात होती है उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि अगर आप घर में उनको कोई काम किसी और तरीके से करने को कहो तो वो कहेंगे नहीं, मैम ने ऐसे बताया या टीचर ने ऐसे बताया। तो ये चीज बड़ी वो फ्रूटफुली यूज हो सकती है ये तो टीचर। मैं हर रोज फेस करता हूँ अपने घर में। वो मेरी बेटी यही कहते हैं कि नहीं मैम ने ऐसे ही कहा था, आप डैडी गलत है, मैम ने ऐसे कहा है। मैं कहता चलो फिर ठीक है। तो सर ये जो रिलेशनशिप है, ये जो एक रिलाई करता है बच्चा और अपने टीचर पे बिल्कुल ट्रस्ट करता है कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक है, तो इसको बड़ा ये टैक्टिस यूज की जा सकती हैं एक हेल्दी, एक अच्छे ऐसे क्लास एनवायरनमेंट की तरफ जिसमें बच्चे की भी पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहे, और डायरेक्शन जो है वो बहरहाल आपकी जो है वो टीचर ही प्रोवाइड करेगी। और किस चीज़ को कितने क्योंकि अब हर जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट होता है, तो वो एक बाउंड्रीज जो है वो बच्चे की लेवल के हिसाब से वो तो टीचर ही उनको बताएगी और एग्जैक्टली कोलेट करेगा, ये बताएगा एग्जैक्टली। सर। Well, thank you so much. If you have any contribution, go ahead. Otherwise, we can stop here. And any feedback with regard to this class or any contribution, please go ahead. So basically, today we have talked about writing our assignments. Sample में आपको भेज दूंगा. Probably I could उसको मैं अपनी असाइनमेंट को छोटा करके सारे उसके जो हैं वो भेज दूंगा या फिर ईमेल कर दूंगा as it is, or I could just shorten it. उसका हमने सीखा. उसके बाद फिर हमने आज जो बात की है वो की है एजुकेशनल साइकोलॉजी की. As teachers, or जब आप tomorrow when you're going to teach somewhere, anywhere in the world, you must know what education psychology is and what role it plays in education. And then also how we apply psychological principles to enhance learning outcomes. इस पे हमने बात थोड़ी सी कम की है, लेकिन चूंकि अगर हम इसको वाइंड अप भी करते हैं तो हम सबका टीच करने का जो सबसे बड़ा मेजर पर्पस होता है वो यही है कि what type of outcomes would I be able to receive or get out of my today's lesson. कि एज टीचर जब आपने लेसन प्लान किया है तो फिर मैं कौन से आउटकम देखता हूँ अपने बच्चों में, अपने प्यूपल्स में, जो लर्नर्स हैं उनके. क्योंकि शिफ्ट हमारी ये है कि हमने सब कुछ उनको टीच नहीं करते जाना, हमने वो चीजें उनके दिमाग से बाहर लेके आने की कोशिश करनी है जो उनके अंदर है, और उनको हमने पॉलिश करना है ताकि कल को अगर वो लीडर्स बनते हैं, अगर वो टीचर्स बनते हैं, स्टेट्समैन बनते हैं, political figures बनते हैं, whosoever, whatsoever they are going to be tomorrow, we shall be able to understand their personality as of today as we are teaching them. So कल को आने वाला
जो उनका मतलब उनका जो फ्यूचर है उसको हम ब्राइटन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बच्चे की साइकोलॉजी को देखते हुए उस पर वर्क कर सकें। यहाँ मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। In my conclusion, if you have any contribution, please go ahead. I think the time is over. Yeah, Ruqayya, you want to say something? जैसे मैं यही कह रही थी कि जो कंक्लूजन आपने दिया है, मतलब यही एक कन्फाइंड और स्टेटमेंट है इसके लिए। या क्योंकि अब ये तो नहीं कि जो मेरे पास इतना नॉलेज है फर्ज करें, और मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा 12 साल का, और मैं उसको अपने नॉलेज के पैमाने पे उसके इंटेलिजेंस को क्या है उसको मैं मेजर करूं, तो ये मेरी फिर गलती होगी ना। मैंने उसकी साइकोलॉजी को देखना है कि वो कितना हजम कर सकता है, कितनी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है, कहाँ तक वो कर सकता है। क्योंकि बच्चे की जो अटेंशन है, आपको पता है ना, आफ्टर में भी 30 minutes they need some kind of break, or some kids they need, like after 50 minutes they can lose their concentration. So we need to be vigilant to that, कि हमने उनको एंगेज भी रखना है, वो उनके इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को देखना है, उनकी ग्रोथ को देखना है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हमने करनी है, उनकी ब्रेन की ग्रूमिंग करनी है, ताकि कल को tomorrow they shall become a good citizen and intelligent people. Yes, sir. So I think we can close here. But even after this, if you will have any question, please, you feel free and come back to us. We appreciate for your contribution. Thank you so much. Thanks for being good class. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks. Over. Yes, Steve. Are you dead? Tired? You had a meeting? Huh? It's a meeting every day, over this issue. I told them that I take their decision. If they want to fire me, let them fire me. That's what I told them. I have no problem with that.